welcome. Let's go. Match found. Deathmatch. Warm up.
happens. Sakin. Don't panic. Trembling is bad for Fight. you. Time to I work. will fan. But same to my. Zip. Night, night. Nice. İyi geceler. Bam. Geber. Viper down. That makes 3. So much for recon. What? Woo. Somehow I thought he's close. Enemy down. I don't know why. That makes 3. 4 down. Let's go. What? Dominating. Goodbye. Dominating. Ah be abi. Ten kills remaining.
5 kills remaining. Hush. What? One kill remaining. भाई क्या मैंने खुद पेस्ट कर दिया ये फक let's go Match found. They have no idea how heartless I am. Reloading. Reloading. Let's begin. In sight. Charge your ults. Gone. My eyes are better than yours.
तो भाई Not मेरा ready एम क्यों yet. नहीं लग रहा? New stage in 10. Stage 2. Reloading. Finished. Phoenix kill. Ultimate orb spawning. Taken out. No hard feelings. Bye. Jets on. Blocking sight. Reloading. New stage in 10. Joke's over! You're dead! Stage 3. Three souls. Be faster. Headshot. Three. Reloading. Reloading. Ultimate orb spawning. Cutting their vision. What? 10 किट हो गए इसमें? Eagle-eyed. Parasite. 10 seconds until stage change. Final stage. Three souls. They will cover. Yikes. Blocking Joke's sight. over! You're dead! Go ahead. Stand your ground. See ya. Ultimate orb spawning. Cutting their vision. My ult's ready. Watch this. Still in sight. Set 3. Reloading. My ult is ready. Three souls. Joke's over! You're dead!
प्लेड ब्रदर सागर सिंह भाई, अच्छा खेले आप। 10 की कुछ ट्रिक थे ना आपकी? हाँ देखा भाई। रैंक क्या है आपकी? डायमंड, ओके ओके ओके। पीक क्या है पीक? Match found. They have no idea how heartless I am. डायमंड जैसे लगता नहीं भाई वो, मतलब ओ इमोर्टल टाइप लग रहा था मुझे। मैंने ट्रैकर भी उड़ा दिया है। चालू हो गई। Let the bullets fly. Reloading. Idiots. Destabilizing. Charge your ults. You're done. I got ISO.
Cutting their vision. Stage 2. Blocking sight. Back off. Cutting their vision. Radiance. Reloading. Blocking sight. Ultimate orb spawning. Embarrassing. Results. New stage in 10. What? Stage 3. Still in sight. Got 3. Blocking sight. Ultimate orb spawning. Nails ready. Reloading. New stage begins. Still in sight. Final stage. Cutting their vision. To disappoint me. They will go. Enemy one down. My ult's ready. Give me those back. My ultimate is ready. Over there. Stay down. Still in sight. Ultimate orb spawning. Headshot. My territory, my rules. Reloading. Got ISO. Got 3. Yikes. Night night.
Let's go. Match found. So just impressive with your content. I would love to stay connected. Let's link up on Discord. You can find me at Prebi974. Sure, brother. They have no idea how heartless I am. Maybe somewhere out there, there's a version of me that's forgiven a version of you. Reloading. 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 Let the bullets I'm outta fly. Dizzy's up. Taken out. Charge your ults. Cutting their vision. Up we go. Dizzy has target. Go, go, go. 10 seconds until stage change. My ult ready. Reloading. Stage 2. Take this. They will go. Raiders on a rampage. Enemy killed.
Let's go. Hello, 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 hello. आपने कभी कैंसल होने के बारे में सोचा? हा 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 हा। स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देते हुए आप किस लाइन में आ गए सर? हेलमेट का है मेरा, पूरा फॉर्म में आने दो। Do you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? अच्छा, तो यहाँ से उठाए इन्होंने जोक। मैं कल से ना बोल रहा हूँ मेरे को ना देजा हु हो रहा है, देजा हु हो रहा है। अब पता चला क्योंकि मैं ऐसे इंसिडेंट पे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। Okay, very problematic. But this one day there was a girl walking in front of me, and there were 3 boys who crossed her and catcalled her. And then they crossed me, and nothing happened, which is a good thing. I should be happy about it. But why am I offended? I'm sorry, what? मैं ये वीडियो ना कभी नहीं बनाता अगर मेरे को इसका इंग्लिश वर्जन ना दिखता। I was just walking and this woman in front of me got aggressively catcalled, and I hate that because I'm right behind her, like I'm next. And then when I walked by, it was silence, and I was like, wow, I hate that even more. देखो पॉइंट ये है, अगर तुम्हें कॉपी करना है विदेशी कंटेंट क्रिएटर को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तुम दबा के कॉपी करो, लेकिन अच्छी चीज तो कॉपी करो। इस वाले केस में, लड़की के केस में, उस लड़की को कोई नहीं जानता, शी इज नोबडी। गलत है उसका, बिल्कुल गलत है। बट रणवीर अलाहाबादिया के केस में थिंग्स गेट डिफरेंट क्योंकि ही इज एन इन्फ्लुएंसर। और इस चीज को लेकर रणवीर ने बाद में अपोलोजाइज करा एंड बोला कि उनको देखने वाली ऑडियंस सारे एज ग्रुप की है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, तो इस चीज का असर उन पे ज्यादा पड़ेगा। I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. Just give an apology. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. रिसेंटली ना काफ़ी रणवीर अलाहाबादिया के मुंह से गालियाँ देख रहा हूँ मैं, पहले कैरी मिनाटी की वीडियो में देखा और अब यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ही इज़ गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम हिज ट्रैक। पर्सनल ओपिनियन। देखो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी है। यहाँ पर मेरा इतना ही कहना था कि भाई कॉपी करना है तो अच्छी चीज़ें कॉपी करो, बाहर से करो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छी चीज़ करो। रही बात दूसरी, रेबल किड की हम बात कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि रेबल किड को क्यों नहीं पेला जा रहा, और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि रेबल किड को क्यों बोला जा रहा है, उसने अपने आप को डिफेंड करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेबल किड ने 2 कमेंट पास करे थे, जहाँ तक मेरे को, मैं देखता नहीं शो, इतना बता दूं मैंने जितना रील में देखा है कि फर्स्ट वो 6 इंच वाला कमेंट जो उसका इनिशियल कमेंट था, एंड दूसरा उस लड़के ने कमेंट पास करा था सेंसेशन वाला कि वी में सेंसेशन खत्म हो गई है, वी में सेंसेशन खत्म हो गई है, लड़के का इनिशियल कमेंट था। वहाँ पर रेबल किड ने अपने आप को डिफेंड करा, पीपल आर सेइंग उसने अपने आप को डिफेंड करा, टोटली गुड। फिर बाद में इनिशियल कमेंट क्यों पास करा वो 6 इंच वाला, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। वहाँ पे तो गलत हुई ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेटर के शो में लड़के ने इनिशिएट करा था वो वाला कमेंट वी सेंसेशन बोलकर, अब आगे उसके रेबल किड ने अपने आप को डिफेंड करा, टोटली जस्टिफाइड। बट एट द सेम टाइम आई आस्क ऑल दोस वुमेन क्वेश्चन जो बोल रही कि उसने डिफेंड करा। अपने ब्रेकअप के टाइम पे रेबल किड ने इतनी सारी वीडियोस अपने एक्स के ऊपर डाली थी, और जब वो डीयू के रीसेंट फेस्ट में गई थी तो वहाँ पर जब बाकी सब ने उसको टॉन्ट मारा तो कैसे वो चिढ़ सकती है। शी वाज यूजिंग हर एक्स नेम बिफोर दैट। अब उसकी वो पर्सनल लाइफ प्राइवेट उसने खुद करी, जब लोगों ने उसको क्वेश्चन करा तब शी इज गेटिंग ऑफेंडेड बाय दैट। व्हाई? अपनी पर्सनल लाइफ उसने खुद रखी थी ऑन सोशल मीडिया। तो वहाँ पे एक जगह कह रहे हो कि ही स्टार्टेड एट वी सेंसेशन को जोक मार के, फिर दूसरी जगह कह रहे हो कि लड़के टॉन्ट क्यों मार रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ प्राइवेट उसने खुद करी। एंड लेटेंट वाले शो में आगे जाके उन्होंने इनिशियल कमेंट मारा 6 इंचेस वाला। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? अगर 6 इंचेस वाला जोक को आप जस्टिफाई कर रहे हो तो फिर लड़के का वी सेंसेशन वाला जोक भी इनिशियल है, वो कैसे जस्टिफाइड नहीं हो रहा? एंड बाकी ये पूरा शो ना इसी के बेस पे है कि वहाँ पे डार्क जोक्स मारे जाएंगे, बट द पॉइंट इज जो तुम्हारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर जा रहा है ना, उसकी बाहर इमेज क्या है? रणवीर अलाहाबादिया की पॉजिटिव इमेज है कि मतलब अब तो लोग उससे ज्यादा गुस्सा थे। रेबल किड की बहुत बेकार इमेज है, लड़कियों में अच्छी है पता नहीं क्यों, बट बाहर ज्यादातर उसकी बैड इमेज है, इसलिए उसको टोका नहीं जा रहा है इस चीज को लेकर। एंड जो ये जोक्स मारे हैं ना, मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता भाई, बट मेरे को बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये लाइमलाइट में चल रहा है, क्योंकि ये होल शो इसी के ऊपर बेस्ड है। यू कैन नॉट
से कि भाई ये कैसे बात हो रही है भैया, वो शो उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मत देखो। पर समराइज कर लेते हैं कि इस पूरे केस में रणवीर को इसलिए टोका जा रहा है क्योंकि उसकी पॉजिटिव इमेज थी। सेकंड पे हमें रहना है बिकॉज उसी का शो है एंड वो इसी शो की वजह से काफी लाइमलाइट में चल रहा है बहुत ही इनफेमस चीजों के लिए। One enemy remaining. Flawless. Let's go. The enemy fears you, Ada. You can use that. हाँ सच्ची. Need a drop. Need a drop. Need a drop. वो फैंटम में गैराज में. Last player standing. यार कॉर्नर में बैठी थी सेज. फाक भाई फाक. They look like us, but are they us? Yeah. No. कोई नहीं भाई. लेट्स गो. Cut their walls down. Cover going out. Get inside. Fuck. Last player standing. Indeed. They're just batteries. And I need a recharge. On my mark. सेव करना. Keep it cool. That's how you survive. They will cover. Here.
spike. The hunt begins. Gun here. Enemy spotted. Spike's here. There's the spike. Gun here. Last player standing. Spike down mid. As much as this world hurt me, it's mine. And I will live to defend it. Here. Placing sentry. Here. On my mark. I'll silence their breach. Yeah. Reloading. Enemy spotted A. Cutting their vision. Shadows traveling. 67, so. Plant the spike. सोवा था राइट पे चलो Help. Player standing. 30 seconds left. Spike planted. My ultimate cover going out. Flawless. One bullet per enemy. That should be enough, yes? जेट सी पे वेट करना थोड़ा जेट और बाकी टीम मैं और कोई एक ही आ जाओ मेरे साथ ए पे थोड़ा फेक करके आएंगे मेन पे फ्लैश वैश करके मैं आ जाऊंगा थोड़ा रुको और फिर जाओ कॉल दूंगा तो I get what I want. Cutting their vision. Still inside. जाओ 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 Drop the spike. Unimportant. Here. Last player standing. 30 seconds left. ये लॉबी में नहीं हारना है भाई मुझे Spike planted.
Okay, let's go. It seems these strangers want me dead. Eh bien, they're not so. They are so dead! Reloading. Placing sentry. Cover going out. Shadows traveling. Feeling sight. CTR है ना ऑफ है मिल जाओ Not ready yet. Shadows Last player standing. So much. One enemy remaining. 3 killed. That was fun. Cover going out. Okay, Omen, you want that back. Reloading. Need a drop. Need a drop. Here, Thank you. here. Reloading. Reloading. Placing sentry. Snuff them out. Cover going out. Alarm bell out. Cutting their vision. You're done. Turret out. Planted. My ult ready. CT One enemy remaining. Enemy in defender spawn. I got your backs. Just, you know, from the front. Spikes here. Reloading. Placing sentry. Watching this. Yes. Here, Time for A field test. here. here. Careful. Cutting their vision. Enemy C. Reloading. Nowhere to run. Fall back. Enemy spotted B. Here. आ जाओ प्लांट हो रहा है Spike planted. Reloading. रहना है वन You will not kill my allies. Last player standing. Bomb grenade out. Remember, your weapon is only a tool. You can't just shoot. Reloading. 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 The spike's still on base.
भाई इसमें लोल क्या हो गया? Fabulous. Still in sight. Enemy spotted B. Lights down. Time out. Shadows traveling. Swarm grenade. Ah, turret down. Placing swarm grenade. Nice. Look your enemy in the eye. Sage was 148. Lol. Need a drop. Thank you. I got money. Need something? I got money. Need something? Need a drop. Thanks. Cover going out. Cover going out. Enemy C. Here. Fuck भाई क्या कैंप कर रहे हो? ये लोग भी मैं क्यों मर रहा हूँ? One less. Here. Here. Plant the Last spike. player standing. Spike down A. My ult is ready. Teleport's ready. Last round before the switch. Lose everything after this. Spend it. Need a drop. So dead. Thank you. Here. Placing Check every sentry. fucking corner, man. Yeah. We survived. Right. Come on. The Help. spike. Grim camps and garage. I got the spike. Enemy C. Stay down. Gun here. Gun here. Plant the spike. Our spike carrier is killed. Spike down C. I have the spike. One enemy remaining. Yes. This. Switching sides. I hate to say it, but probably best to play as team. Watching this. So, what's the plan? Placing alarm bot. Here. Placing sentry.
कब दे रहे? A सब Spike down On A. site, on site. One enemy remaining. Spike spotted A. Reloading. Here. nice. Yes. Gun here. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Oh, sorry. Watching this. Turret out. Stay safe. Here. Here. Shadows traveling. Shadows traveling. Here. Cover going out. जब दे रहे. Enemy spotted A. 30 seconds left. Spike planted. One enemy remaining. My ult ready. Shadows traveling. You really expect that to work? Just let them try to catch me. Sight. Spike planted. Cutting their vision. They will cover. Last player standing. Flawless. I feel the strain. Block it out.
Cover going out. Spike planted. Stealing sight. Last player standing. My city needs me. I can't be away for long. Let's end this quickly. Reloading. Reloading. Embarrassing. Oh, sorry. Watching here. Careful there. Here. Swarm grenade out. Reyna killed. Placing sentry. Adios. Reloading. See ya. Here. Cutting their vision. One enemy remaining. Spike down mid. Long. My burden never ends. Reloading. Reloading. Placing alarm bot. Placing sentry. Don't overthink it. That's my job. Yeah. Need backup. Yeah. Long. Need backup. Net. Trap destroyed. Multiple Spike planted. Stealing sight. Got one. Short है. Placing swarm grenade. Last player Swarm grenade standing. Let us see what they have planned for us this time. Placing alarm bot. turret out. For you, hermanita. Yes. Turrets destroyed. Enemy spotted. C. Nowhere to run. Shadows traveling. Placing swarm grenade. Last player standing. My ult is ready. Spike down C. Teleport's ready. That
works. Spike planted. On my trap. Team Ace. The backs will be towards at least one of us. They are so dead. Let's remind them who we are. Placing swarm grenade. Bravo. 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 Off your feet! Enemy spotted mid. Spike planted. Flank, flank. Teleport's ready. चैम्बर पीछे देखने एक बार. Last player standing. Match point. We get a clip, we move in. Got it? Bravo. Reloading. Reloading. Placing sentry. Keep up. The hunt begins. Reloading. Prepare for hellfire. You will not kill my ally. Impeccable kill. There. Here. Spike down A. One enemy remaining. There you are. Nice. Shit. Take aim, Zenfire. Let's not complicate. Does anyone have funds? Let's hold positions. No. Help. Quick peeks now. Turret out. Need backup. Away. Enemies A. You did well. Point destroyed. Spotted. Fall back. You were a mistake. They will cover. One enemy remaining. Spike down A. I don't die. I survived obliteration. I will survive them. I need this. Thank you. Reloading. Here. Turret out. Watching here. Placing sentry.
What the fuck? 1173. Spike down, attacker spawn. Last player standing. One enemy remaining. Spike down, attacker spawn. Thirty seconds left. Shadows traveling. Win. Show me where to go. Reloading. No. Oh, sorry. Reloading. Oh, sorry. Help. Let's go. Turret out. What's this? Shoot it. Enemy Careful. Shadows traveling. No. Poor wretch. Still in sight. Cutting their vision. One enemy remaining. Flawless. Nice. Switching sides. Overtime. तो लेट जाएंगे, बहुत लेट जाएंगे. पूरी ब्रिज की यूटिलिटीज खत्म होने के बाद जाएंगे भाई. आराम से. Does anyone have fun? Reloading. No. Yeah. Does anyone have fun? गैराज पे जिंद रहता है, ठीक है, देख के जाओ. Thank you. I need this. 6 पे खेलो तो मार. Reloading. Let's play slow. Slow, slow. Cover going out. Reloading. No. आराम से रुको. 1177. One down. Last player standing. Recalling my bot. भाई यार ये सही. 30 seconds left. Recall. Can't use that yet.
Switching sides. Match point. Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. ये लॉबी में ऐसे नहीं मरना है भाई. Placing swarm grenade. Keep up. Placing sentry. Here. Cutting their vision. Still inside. Auf Wiedersehen. Sage was garage. Found them. Swarm grenade out. Enemy spotted. B. One enemy remaining. Here. A. Okay. Spike planted. There. Let's go. Blocking sight. Blocking sight. You really expect this to work? Switching sides. Draw. Overtime. Yes. एक काम करे क्या? बी पे देख रश हो सकता है, ठीक है? वुमेन दोनों साइड स्मोक देते हैं और वॉल तोड़ के रश करते हैं. बी बहुत इजी है. ठीक है करते हैं. फ्लैंक का लगा. Careful there. Focus now. डोर्स का हाँ वॉल तोड़ो और ड्रॉप कर दो. Cover going out. Shadows traveling. Cutting their vision. Enemy B. Enemy spotted B. Last player standing. Spike down B. Switching sides. Match point. The symphony of death. ये draw होगा then so. Does anyone have funds? Does anyone have funds? Keep it cool. That's how you slide out. Okay, hold on. Target destroyed. Enemy spotted C. Too slow. What? Blinding. Again. Spike planted. All side. One enemy remaining. Out of charges. Nice. Okay. They are so dead. Oh no. You don't deserve munitions. Swarm grenade out. ये draw Switching होगा then so. sides. Fuck. Overtime. Look
Shadows. की मुश्किल है कहाँ जाना होता ये जाना लॉन्ग से शॉर्ट पे रहता हाँ होल्ड कर लेते Placing sentry. होल्ड करना है होल्ड मैं कर सकते हो, उन्होंने दिया था। Enemy spotted. C. Let's play slow. Spike drop. Cover going out. I have the spike. Good. Need backup. Plant the spike. No. Plant the spike. गैराज को मार Spike planted. Cover going out. Watching here. Last player standing. There they are. One enemy Not remaining. your best. My ult is ready. They are so dead. Switching sides. Match Out of point. charges. They don't have a single life worth saving. Placing alarm bot. Time for a feed. Placing swarm grenade. Need backup. Enemy sentry. You did well. They found my trap. Shadows traveling. Shadows traveling. And I mid. Watching here. Stealing sight. Deep building. Spike planted. Cover going out. B window one. Last player standing. The hunt begins. Attackers win. Silver थी. Where we began. Match found. थर्ड पे लेवल किड इसीलिए क्योंकि उसने भी गाली गलौज करा। स्टेशन चलाने को चौथे स्थान पे रखते हैं क्योंकि उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला बट समझ आता है जब सारे पहले जा रहे हैं तो वो क्यों बच रहा है। फिफ्थ वाले का नाम मेरे को नहीं पता, नो ऑफेंस भाई जो भी हो आप, वो भी पहले गए इसी चीज में। एंड एक चीज ना मैं अपनी वीडियोस में काफी कहता हूँ कि जितने भी डैंक मीमर्स कॉमेडियंस वगैरह है ना, कॉमेडियंस की बात करें, अगर आप अपनी वीडियोस में इतना डार्क ह्यूमर रख रहे हो ना तो एक बार महीने में एक आधी बार आके इतना बोल दिया करो कि भाई ये सब डार्क ह्यूमर है, जिनके साथ हम बात करते हैं, जिनका मजाक उड़ाते हैं, वो कंसेंट के साथ होता है, उन्हीं के सामने उड़ाया जाता है। हम किसी जनरलाइज करके गंदी गंदी चीज़ें नहीं बोलते। ये चीज़ें सिखाओ क्योंकि आजकल लोगों को डैंक कॉमेडी के एक थिन लाइनिंग होती है, डैंक कॉमेडी और डिसरिस्पेक्ट, उसके बारे में नहीं पता। तो प्लीज फोकस ऑन दैट। और एक बात और है, जितने भी लोग ये गुस्सा होकर सबको बोल रहे हैं ना कि समय रहना कि ऐसी की तैसी रणवीर अलाहाबादिया रेबल किड, तुम लोग बताओ, तुम लोग उनके गंदे शब्द बोलने के अगेंस्ट में हो कैसे करके, उनको खुद से गंदे गंदे शब्द बोलकर।
तो भैया ये कौन सी हिपोक्रेसी है तुम लोगों की? अगर तुम्हें किसी को क्रिटिसाइज करना है तो बी सिविलाइज पहले तो इंसानों की तरह उनको क्रिटिसाइज करो। ये गंदी गंदी गालियाँ देकर भयंकर लेवल की गालियाँ दे रहे हो तुम, यू नो दैट। एंड ऑल दिस विच इज हैपनिंग दैट इज मॉरल पुलिसिंग। जो केस इनके ऊपर हो रहे हैं बिल्कुल फालतू केस हैं, लेट मी बी ऑनेस्ट। अगर तुम्हें केस ही सॉल्व करने हैं ना तो मैं तुम्हें ना ये अकाउंट दिखाता हूँ। अब ये अकाउंट रैंडम कपल की फोटो उठाता है, वहाँ पे गंदे गंदे कमेंट लिख देता है, उनकी वीडियो पे कैप्शन डाल देता है एंड व्यूज छापता है। अब हमारा मीडिया, पॉलिटिशियन, अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चुप है क्योंकि ये लाइमलाइट में नहीं है, विच शुड बी अ बिग केस। क्योंकि लेटन के केस में वहाँ पे लोगों को मॉरल पुलिसिंग करने की जरूरत है, बट इस वाले केस में रियल पुलिसिंग करने की जरूरत है। तो ऐसे वल्गर अकाउंट के पीछे हमारी पुलिस, हमारे पॉलिटिशियन, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बोलते टाइम टू टाइम? ये विदाउट परमिशन लोगों की फोटो उठा के वल्गर कमेंट उसके ऊपर लिख देते हैं। व्हेन आर वी गोइंग टू फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ दीज शोज विच हैव डार्क कॉमेडी? देखो डार्क कॉमेडी के सबका ओपिनियन अलग रहता है, मेरा अलग है, तो वी कैन नॉट हैव अ कॉमन ग्राउंड ऑन दिस। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा यू कैन जस्ट नॉट वॉच इट। मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा, तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज तक कबीर सिंह एनिमल मूवी नहीं देखी। जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं मत देखो। इस तुम्हारे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम पे आ रही है नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करो एंड चलते बनो। बट जहाँ पे एक्चुअल क्राइम हो रहा है, विदाउट परमिशन तुम्हारी फोटो उठाई जा रही है, उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट पास किए जा रहे हैं, देन यू हैव टू बी वोकल अबाउट इट। ये साइबर क्राइम है। तो मैं जो भी लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को इतना बोलूँगा कि इन सब चीज़ों पे लेटेंट वाले शो पे अगेन मॉरल पुलिसिंग की जरूरत है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो शो का थीम है और यहाँ पे असली पुलिसिंग की जरूरत है। तो सारा प्रशासन इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड। गो शो नाउ। 3. What the fuck? Dominating. क्या मैं ड्रग्स पे हूँ? Enemy killed. Eyes down. हाँ? Got him. 3. क्या गंदा हाथ रहो भाई लोग। Party's over. Oops. सेज ड्रग्स पे है क्या भाई? 10 kills remaining. मैं गंदा खेल रहा हूँ, कोई ड्रग्स वग्स पे नहीं है।
शायद मेरा एक्सीलरेशन ऑन है माउस का. Five kills remaining. क्या कर रहा हूँ मैं? One kill remaining. Match found. Deathmatch. Warm up. What is mine? Sorry. Fight! I will be their nightmare. No.
Dominating. Pitiful. Remaining. What? Five kills remaining. One kill remaining. लेट्स गो गाइस, जो भी देख रहा है लाइक करके जाओ भाई। लाइक सब्सक्राइब करना भाई। जय माता दी। हो रहा रिकॉर्ड ना? हाँ हाँ हो रहा है। वहाँ से परमिशन दे दी आपने? Match found. हाँ मुझे तो सीधा वही बता रहा है कि रिकॉर्डिंग एंड हाँ हो रहा है। हो रहा है ना, बस बढ़िया। तो डर लग रहा है आपको फिलहाल? हाँ मतलब डर नहीं, बट ऐसा थोड़ा हो रहा है कि पता नहीं क्या पूछोगे और एक बात बताओ, जब डालते समय डर नहीं लग रहा था इतना? नहीं यार, मतलब मुझे पता नहीं था कि यहाँ तक ऐसे पॉडकास्ट होने लगेंगे। नहीं पॉडकास्ट देखो, पॉडकास्ट तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, मैं वैसे थोड़ा सा ना कि मेरे को भी क्लियर हो जाए, क्योंकि तुम्हारी बातें और मेरी बातें मिल नहीं रही थी। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो माय नेम इज गोस्ट एंड शी इज दिया। हर यूजर नेम इज डोंट माइंड दिया एंड माय यूजर नेम इज गोस्ट राइज। यू कैन फाइंड मी ऑन यूट्यूब, ट्विटर विद डबल ई इन द एंड एंड ऑन इंस्टाग्राम। सो हमने डिसाइड करा था दिया के साथ पॉडकास्ट करने का बिकॉज ऑफ हर कंट्रोवर्शियल वीडियोस
एंड उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करने आया हूँ, क्योंकि इसको बहुत हेट मिल रहा है अभी के टाइम पे, एंड थोड़ा बहुत बोला जाए तो फिर कंट्रोवर्शियल होने की वजह से वो हेट मिलना ऑब्वियस है थोड़ा। तो लेट्स क्लियर एवरीथिंग कि मैडम का क्या कहना है। मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ आपको? कर दिया मैंने इंट्रोड्यूस, आप बताओ अपनी तरफ से थोड़ा। ठीक है, हाय नमस्ते एवरीबॉडी, मेरा नाम दिया है एंड अगर आप ये देख रहे हो आई एम प्रीटी श्योर कि आप क्यों देख रहे हो ये। एंड जैसे उन्होंने बोला मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है फॉर सम रीजंस, तो आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन्हें, एंड आई थिंक हमारी सारी ऑडियंस को जो इतने ज़्यादा सवाल लेके बैठे हुए हैं और उनको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि व्हाई आई थिंक द वे आई थिंक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ चलो ठीक है, सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा कि जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या जा रहा था कि आपने आर को जस्टिफाई करा, वो क्या मतलब है, पहले आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करो। आई थिंक आर एंड आई थिंक क्या कहते हैं डोमेस्टिक। हाँ पहले आर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब आर की बात चल रही थी एंड मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे। आई थिंक कोलकाता में कुछ केस हुआ था उसके रिगार्डिंग देयर वाज दिस वन वीडियो जहाँ पे आई वाज रिप्लाइंग टू दिस वन पर्टिकुलर कमेंट, एंड अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा लोग मेंशन करना अलाउ नहीं करते हैं अपने यूज़र नेम को। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड, एंड व्हेन आई फाउंड आउट जब लोगों ने एक्चुअली वो मुझे पॉइंट आउट करना शुरू किया कि आपके मतलब आपने जस्टिफाई किया है ये वो, तब मैंने देखा और इट वाज लाइक अ सिंगल कमेंट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू अ सर्टेन कमेंट। तो आई थिंक इट वाज जस्ट वन गाय ओनली जो कमेंट कर रहे थे, यूज़र नेम नहीं बताऊंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन उन्होंने समथिंग ऐसा ही कमेंट किया था कि आई थिंक ड्रेसिंग पे, या आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर क्योंकि वो 1.5-2 महीने पहले की बात है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था, इट वाज नॉट जस्टिफिकेशन, आई वाज रिप्लाइंग टू दैट वन पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक पूरा लंबा हो गया था। द मोमेंट आई फाउंड आउट, मैं गई वहाँ पे, मैंने तुरंत से वो कमेंट डिलीट किया है क्योंकि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि आई कमेंटेड सेपरेटली इंस्टेड ऑफ द एंटायर थ्रेड जो बोलते हैं कमेंट्स का। तो मतलब आपका इनिशियल कमेंट नहीं था वो? जी आपने किसी को रिप्लाई करा था? हाँ, और अभी आर यू श्योर अबाउट इट? यस 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 यस। क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैं इतना इंडल्ज नहीं रहता इस चीज़ में, मैंने जो देखा मैं उस बेसिस से बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने एक इंसान के कमेंट को रिप्लाई किया था एंड इट वाज अबाउट द कोलकाता वाला केस जिसमें आई थिंक कोई एक लड़की प्रोटेस्ट कर रही थी कि नो मींस नो, यस मींस यस वाला। सो दैट वाज व्हाटएवर आई वेयर, मैंने वो वीडियो देखी थी, हाउ एवर आई ड्रेस, नो मींस नो, यस मींस। हाँ हाँ। तो अगर उस पर्टिकुलर वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट वीडियो पर्टिकुलरली? ये वीडियो तो पता है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ। तो उस वीडियो को क्या? आई थिंक सही है, लाइक इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग डेफिनेटली पीपल विल स्टैंड अप अगेंस्ट इट, एंड स्पेशली जब लड़की का कोई दोष नहीं होता है तब पीपल विल स्टैंड अप अगेंस्ट इट। सो आई रियली डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन टुवर्ड्स दैट वीडियो, लेकिन इफ समथिंग इज रॉन्ग डेफिनेटली पीपल विल स्टैंड अप अगेंस्ट इट। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। यहाँ पे मेरे को लगा कि वो वाला कमेंट आपका इनिशियल कमेंट है। नहीं, और आई थिंक अभी काफ़ी रिसेंटली इसी हफ्ते में शायद लोगों के फीड्स पे वो वीडियो आई है और उन्होंने वो फाइंड आउट किया है कि आई हैव कमेंटेड दैट पे, बट इट वाज नॉट माय इनिशियल कमेंट एंड आई कुड नॉट इवन गो एंड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी डीएम कि नहीं गाइस देखो ऐसा है, इनिशियल कमेंट ये था, और इनिशियल कमेंट का भी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है। सो लाइक पीपल वोंट बी मतलब जस्टिफाइड तो नहीं, लेकिन पीपल वोंट बी कन्विंस्ड कि अगर मैं उन्हें बोलूँ कि मेरा इनिशियल कमेंट नहीं था, क्योंकि अभी तो स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ्स पे सब चलता है एंड आई रियली डोंट हैव दैट इनिशियल कमेंट आल्सो, क्योंकि उस इंसान ने भी मे बी डिलीट कर दिया हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन मैं जो पूछने वाला था वो था डीवी को लेकर। आपका एक पोस्ट था जो कह रहे थे कि आपने जस्टिफाई करा है एंड आपका कमेंट भी देखा भी है मैंने वाला। हाँ, आई नो। हाँ, वो क्या था? ओके, तो आई डोंट रिमेंबर द पोस्ट, आई रिमेंबर द कमेंट आई मेड। मैंने कुछ तो ऐसे ही लिखा था कि मैन जो होते हैं वो ज़्यादा अब्यूज़िव अपनी वाइफ को लेके तब हो जाते हैं जब उनकी वाइफ शायद उन्हें ओबे करना छोड़ देती है या उनकी बातें नहीं सुनती है। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट, आई थिंक मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग एंड आई डोंट थिंक एनीवन डिजर्व्स डोमेस्टिक वायलेंस, बट द थिंग इज़ कि आई थिंक अबाउट इट फ्रॉम एक वेरी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि यार अगर आप इंडियन हाउस होल्ड में देख लो, आम आदमी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शंस जो यू नो अब्यूजर हो जाते हैं फॉर नो रीजन, बट जो नॉर्मल लोग हैं, आई थिंक इंडिया में अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट लिसन टू मैन। लाइक अगर इवन कोई भी मिडिल क्लास वाला हाउस होल्ड देख लो, आई थिंक लड़कों के इमोशंस को इतनी ज़्यादा कभी वैल्यू नहीं दी जाती है एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी के ऐसे यू नो हम स्ट्रॉन्ग बन के रहे, हम पूरा घर संभालना है वो करके। तो आई थिंक जब अगर उनकी वाइफ उनकी बातें नहीं सुनती है या आई डोंट से सुनती है बट समझती है और ऐसे सब कुछ नहीं होता है, तो एक
टाइप ऑफ गुस्सा होता है जो अंदर ही अंदर बिल्डअप होना बहुत ही मतलब आई वोंट से गुस्सा, वो शुरू होता है कि अपसेट रहना चालू हो गया और कुछ एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, बट उनको पता है कि अगर वो ऐसे बोल देंगे कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो एक सिग्मा है कि नहीं यार आप तो लड़के हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, लाइक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप उस चीज़ को सहन कर लोगे। तो ये चीज़ ओवर द टाइम बिल्डअप होती जाती है एंड दैट इज़ व्हेन डोमेस्टिक वायलेंस इट्स स्टिल नॉट करेक्ट, डीवी जो है इट्स नॉट राइट, लेकिन जब इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं लड़के कम्युनिकेट नहीं करते हैं और जब कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं आई थिंक काफ़ी सारी लड़कियां जो है वो उनको गिल्टी फील करवाती है टू ओपन अप, लाइक अगर आपने मेरे सामने अपना ओपिनियन या अपने एक्चुअल जो जज्बात है वो शेयर किए तो वो सामने वाले को गिल्टी फील करवा देगी, तो इसलिए वो कभी मतलब खुल के बोल ही नहीं पाते एंड उनकी तरफ से भी एक गलत बात है कि इट शुड नॉट टर्न इनटू एंगर, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। आप बैठ के बात करो, अगर आपका पार्टनर या आपकी वाइफ नहीं सुन रही है आप उन्हें ज़बरदस्ती बिठाओ, टॉक इट आउट, बट समटाइम्स इन सम केसेस इट जस्ट डजंट हैपन एंड आई थिंक कि लड़कों के ऊपर भी इक्वली, आई वोंट से इक्वली बट लाइक काफ़ी हद तक प्रेशर होता है घर संभालने का एंड आई थिंक फैमिली आगे बढ़ाने का। तो आई थिंक अभी तक क्योंकि मैं ना इस पूरी चीज़ में बहुत नहीं हूँ तो मुझे खुद को पता नहीं है कि यार क्या वर्ड्स है क्या नहीं है, समटाइम्स आई यूज दोज फ्रेजेस जो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग है बट मैं उस तरह से कभी सोचती ही नहीं हूँ, आई थिंक हाँ नहीं ऐसे होता है तो आई कॉमेंट एंड आई पोस्ट, सेम विद माई वीडियोज ऑल्सो। तो इसलिए ठीक, मैं आपको एक बात बोलूँ, जो आपने वर्डिंग वहाँ यूज़ करी मेरे ख्याल से आप वो चीज़ बताना चाहते थे जो सोसाइटी में चल रहा है, बट आपने जो वर्ड यूज़ करा ना वो एक्चुअली रॉन्ग है और वो जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। अगर कोई लड़के में बिल्डअप हो रहा है किसका, घर की बातें नहीं सुनी जा रही, बहुत चीज़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई भी वो नहीं बनता उसको कि वो मारे, डोमेस्टिक वायलेंस करे, कोई भी हो ही नहीं सकता, जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। क्योंकि अभी रिसेंट केस में अतुल सुभाष के केस में देखा होगा आपने, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस बंदे ने हाथ नहीं उठाया, वो खुद ही हाँ वो समझ आता है कि अब उसके बारे में आप अलग से बात करो, अच्छे से बात करो, दैट पॉइंट वो होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना कि उस बारे में बात करो, अपने उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करो, अवेयरनेस फैलाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट यहाँ पर यही बात होगी इस जगह पे, अगर मैंने अतुल सुभाष का केस लिया, आप यहाँ पर बोल भी सकते थे कि ये फेमिनिस्ट बोले, इस टाइम पे ये चुप बैठी हुई थी, तो कहते हैं 95% फेमिनिस्ट पेज एकदम चुप बैठे हुए थे इस टाइम पर, आपको यहाँ पे बोलना चाहिए था कि अगर ये बात आप उठा रहे हो सोसाइटी को लेकर तो यहाँ पे उठाओ, लेकिन आपने यहाँ पे बोलकर बहुत गलत करा, क्योंकि अभी वहाँ पे उस वाले केस में हमारे पास लॉज नहीं है। आपको पता होगा इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर लॉज है ही नहीं, अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को पीट रही है देन ही कैनॉट फाइल एनी कंप्लेन। तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, जस्टिफाई करना चाहिए था कि वैसे तरीके से आपको यहाँ से आवाज़ उठानी चाहिए थी, यहाँ से आपको, अगर आप फेमिनिस्ट को यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराते कि तुम क्यों नहीं बोल रही, इक्वालिटी का नारा जो लगाते हो, तब देन आई थिंक तब वो चीज़ बेटर रहता, लेकिन जो आपने बोला दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। तो उसके हाँ तो उसके रिगार्डिंग कुछ उस पर्टिकुलर जो हाँ, मैं ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा मतलब आप तो काफ़ी टाइम से कंटेंट भी बना रहे हो I went to एंड आई थिंक Abbottabad, Pakistan and found Osama bin Laden's compound. Here you've got the foundation. So this is where the walls would be. Bin Laden was killed here by US Navy SEALs on May 2nd, 2011. There were 3 floors, and Osama lived on the 3rd floor. Somewhere right where I'm standing is where he was killed. I met some local kids playing cricket on the compound and they showed me around a bit. Say hi, guys. Hello, how are you? Hello. The craziest thing about this place is that it's located less than a mile from Pakistan's military academy. The house was destroyed by Pakistani authorities and now all that remains is the foundation. And what is this? It's toilet. This is the toilet? Toilet of Osama bin Laden. The kids were very eager to make sure I didn't go home empty-handed. This is how they break off souvenirs from the floor tiles. I also met a 20-year-old guy who lives near the compound and remembers the night of the raid. Helicopter just came from my house and then just dropped over there. Never think that it's not somehow it is just a common person. I ended my visit by buying all the kids ice cream from the local ice cream man, which unsurprisingly got pretty chaotic. Guys, careful. I went to Abbottabad, Pakistan and found Osama bin Laden. This is Liang Fenwang, a 40-year-old Chinese man from Mililing village in the southern province of Guangdong. What? The Sahara is the world's largest desert, and crossing it is only What if I told you? These are the best gender reveal moments. आपको पता है चाइना ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाया था 2012 में यांगजी रिवर पर, जिसने पूरे अर्थ का रोटेशन स्लो कर दिया था। जब ये डैम बना तो इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ,
जो पानी पहले ग्राउंड लेवल पर बहता था वो अब एक ऊंची हाइट पर पहुंच गया। अब इतने बड़े मास की हाइट इंक्रीज हो जाने के कारण अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया और अर्थ का रोटेशन 0.00000006 सेकंड से स्लो हो गया और इसी के साथ नॉर्थ पोल भी अपनी पोजीशन से 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया था। अनइमेजिनेबल। सिर्फ एक डैम से अर्थ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं क्या? बट ये वीडियो इस डैम के बारे में नहीं है। ये वीडियो है आने वाले मेडॉग डैम के बारे में जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर चाइना अब बनाने जा रहा है। ये नया आने वाला डैम इस पुराने डैम से 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा। तो सोचिए अर्थ पर ये क्या बवंडर बचाएगा। बट हमारे लिए ये डैम इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और इस डैम के बनने से इंडिया पर भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं आने वाले मेडॉग डैम के बारे में, कैसे ये बन रहा है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इंडिया पर इसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि वो IIT JEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स हों कॉलेज के जाने के लिए या फिर स्कूल कॉलेज के रेगुलर एग्जाम्स हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और टफ एग्जाम्स देकर क्रैक किए हैं, जैसे कि UPSC का, IIT JEE का, गेट का, और इनको देकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ऐसी बहुत बारीकियां सीखी हैं एग्जाम को एनालाइज करने की, जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता और स्टूडेंट्स के बहुत काम आती है। एग्जाम में हायर स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलती है। अपने सालों का एक्सपीरियंस बॉयल डाउन करके मैंने 2 घंटे की क्लास बनाई है। आप सबको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेडॉग डैम की कहानी। ब्रह्मपुत्र रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो 3 नेशंस में से होकर निकल जाती है, चाइना, इंडिया और फिर बांग्लादेश। इसे असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तिब्बत में इसे यारलंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल में इसे दिहांग या फिर सिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना रिवर। आई एम सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इतना टफ नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बाय इटसेल्फ ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रिवर है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ वाटर और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है लेंथ के साथ। लगभग 4000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके ये बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है और गंगा रिवर भी एक पॉइंट पर आकर ब्रह्मपुत्र के अंदर ही मर्ज हो जाती है। ये रिवर इंपॉर्टेंट है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए क्योंकि वहाँ पर ये सबसे बड़ा सोर्स है फर्टाइल सॉइल का, साफ पानी का और बहुत सारी लाइवलीहुड ब्रह्मपुत्र रिवर के चारों तरफ जुड़ी हुई हैं। इस रिवर का इंडिया में रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स इस रिवर के कारण सर्वाइव कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम नहीं बने। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इनफैक्ट भूटान ने भी कई सारे डैम प्लान किए हैं, कई डैम बनाए भी हैं इस रिवर के ऊपर, क्योंकि इस रिवर का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका वॉल्यूम इतना लार्ज है कि एक बहुत बड़ा अनटैप्ड एनर्जी पोटेंशियल इस रिवर में है और इस रिवर को माइटी ब्रह्मपुत्र भी इसी कारण बोलते हैं। मगर इस एनर्जी पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के अंदर चाइना सबसे लीड में रहता है क्योंकि एक तो उनके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, दूसरा उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं और इसीलिए वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस रिवर पर लेकर आ चुका है और आएगा। मगर इस रिवर को लेकर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इंडिया और चाइना के बीच में इस रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। जनरली जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होती हैं उनको लेकर एक एग्रीमेंट, एक पैक्ट होता है 2 नेशंस के बीच में और इसी कारण चाइना ने आज तक ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो भी डैम्स बनाए हैं उसके कारण इंडिया हमेशा चिंता में ही रहा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से होकर इंडिया में आती है और चाइना जब चाहे जितना चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो डिसरप्ट कर सकता है, उसका पानी रोक सकता है, उसको डाइवर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल 2015 में चाइना ने जांगमू डैम बनाया था ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ये डैम बनाने से पहले चाइना कंटिन्यूसली डिनाई करता रहा कि हम ब्रह्मपुत्र पे कोई डैम नहीं बना रहे हैं, हम कोई प्लान नहीं कर रहे हैं इस तरह का। मगर जब इन्होंने डैम बनाया तो अचानक से इसका अनाउंसमेंट किया, इंडिया को भनक दिखने लगी। इस डैम को लेकर भी इंडिया ने कई बार चाइना से रिक्वेस्ट किया है तो इस डैम की हाइट रिड्यूस करें, यानी इसके अंदर जो पानी का वॉल्यूम है उसको कम करें, मगर चाइना ने इन सब रिक्वेस्ट को रिफ्यूज ही किया है। अब हालांकि इंडिया चाइना के बीच में कोई ब्रह्मपुत्र का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट तो नहीं है, मगर 2002 में एक MOU जरूर साइन हुआ था जिसमें चाइना ने ये एग्री किया था कि इस रिवर से रिलेटेड डेटा और फोरकास्टिंग हम इंडिया को प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया को फ्लड से चेतावनी मिल सके या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर में हो रहे चेंजेस से वो अवेयर हो सके। और ये एग्रीमेंट कंटिन्यूसली रिन्यू भी होता जा रहा है। 2018 में लेटेस्ट ये एग्रीमेंट रिन्यू हुआ था। तो ये तो थी ब्रह्मपुत्र रिवर की बात। अब थोड़ा साइड में चलते हैं, उस डैम के बारे में बात करते हैं जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है और जो चाइना ने बनाकर अर्थ का रोटेशन स्लो कर दिया। इस डैम का नाम है 3 गोर्जेस डैम। और इस डैम का डिस्कशन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जो आने वाला मेडॉग डैम है वो इसे 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए ये समझते हैं कि ये 3 गोर्जेस डैम कितना पावरफुल है। करंटली 3 गोर्जेस डैम वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है एज पर वॉल्यूम ऑफ वाटर। 2012 में ये बनकर तैयार हुआ था और इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है 22.5 गीगावाट, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश को पावर दी जा सकती है। इस डैम को बनाने के लिए लगभग 10 लाख लोगों को रीलोकेट करना पड़ा था। 3 सिटीज, 114 टाउन्स और लगभग 1600 विलेजेस इस डैम के कारण खत्म हो गए। जब ये डैम पूरा भर जाता है तो इसका पानी लगभग 632 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जो पूरे मुंबई के एरिया के बराबर है।
अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जब ये डैम बना तो इसमें पानी इकट्ठा होने लगा। जो पानी पहले ग्राउंड लेवल पर बहता था वो अब एक हाइट अटेंड करने लगा, और इतना ज़्यादा मास जब एक हाइट पर पहुंच गया तो अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और इस कारण अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, जिसके कारण अर्थ का रोटेशन स्लो हो गया 0.00000006 सेकंड से, और नॉर्थ पोल 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। एनवायरमेंटली इस डैम ने बहुत तबाही मचाई, इसने इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर दिया, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट किया, कुछ एनिमल्स, कुछ फिश स्पीसीज जो सर्वाइव करती थी इससे पहले वो विलुप्त होने लगी, कई सारे लैंडस्लाइड आने लगे, कई जगह लैंड इरोजन होने लगा, कई जगह फॉरेस्ट खत्म हो गए। तो इस थ्री गॉर्जेस डैम के डेवलपमेंट के साथ साथ एक तरफ चाइना ने जहां इतना बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बनाया, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन भी ये डैम लेकर आया। अब रिसेंटली दिसंबर 2024 में चाइना ने एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम ब्रह्मपुत्र रिवर पर मेडॉक डैम बनाने जा रहे हैं, जो थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर का एक यूनिक फीचर है, तिब्बत के मेडॉक टाउन में ये रिवर एक शार्प यू टर्न लेती है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है एंटायरली। एक माउंटेन वैली के अंदर से निकलती है यू टर्न लेते हुए, और इस वैली को द ग्रेट बेंड कहा जाता है, और इसी एग्जैक्ट साइट पर चाइना ये मेडॉक डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। इस एग्जैक्ट ग्रेट बेंड के बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट गॉर्ज में तेजी से नीचे गिरती है, और इस हाइट डिफरेंस के कारण एक बहुत बड़ा एनर्जी पोटेंशियल है ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो चाइना टैप करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता है। लगभग 2000 मीटर का ये ड्रॉप है, और इसको कैपिटलाइज करके एक डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत तगड़े तरीके से किया जा सकता है। ऐसा एस्टिमेटेड है कि ये मेडॉक डैम 60 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा, जो इस डैम का 3 गुना होगी। ये डैम सबसे लार्जेस्ट होगा, इसके साथ ही सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होगा पूरे वर्ल्ड का, और इसका कॉस्ट होगा $137 बिलियन US। ऐसा प्लान है कि 2033 तक ये डैम फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। मेडॉक डैम के बेनिफिट्स अनडिनाइबल, बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, कोयला या फिर फ्यूल नहीं जलाना पड़ेगा, बहुत सारे हाउस होल्ड्स को बिजली मिलेगी, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमी में बूम आएगा। ये डैम बनाकर पोटेंशियल फ्लड्स जो आ जाती है नीचे के रीजन्स में, उनको कंट्रोल किया जा सकेगा, इस डैम में पानी को रोका जा सकेगा। मगर इसके इतने सारे इंप्रेसिव बेनिफिट्स होने के बावजूद इंडिया के लिए काफी सारे चिंता के विषय ये डैम लेकर आता है। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इस डैम से चाइना को फुल कंट्रोल मिल जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी पर, और इस ग्रेट बेंड से हो सकता है फ्यूचर में वो इसके पानी को डाइवर्ट भी करके कहीं और ले जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी के कम होने का मतलब है इंडिया के लिए ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की वाटर का शॉर्टेज, जो फिशेस, जो प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं वो मर सकते हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ सकता है, फिशिंग में कमी आ सकती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो अभी इंडिया में एक बहुत बड़े स्पैन में फैली है वो श्रिंक हो सकती है, जिससे आसपास की लैंड ड्राई हो सकती है। कई सारे टाउन्स जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर पूरी तरह से रिलाई करते हैं उनका इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। चाइना का ब्रह्मपुत्र जैसी इंपॉर्टेंट रिवर पर इतना बड़ा डैम बनाने का एक यूनिलैटरल डिसीजन है, जो डाउनस्ट्रीम वाले नेशन से डिस्कस किए बिना डिसीजन उन्होंने लिया है, वो पूरी तरह ग्लोबल कंडक्ट में गलत है। और अब आते हैं इसके सबसे बड़े रिस्क पर। 1950 में मेडॉक में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिस कारण ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो डिस्टर्ब हुआ, कई जगह लैंडस्लाइड्स और कई जगह फ्लडिंग ब्रह्मपुत्र में हुई। ये अर्थक्वेक तो तिब्बत में आया था, मगर इसके कारण डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में हुआ। अब जरा सोचिए, ये डैम उस एग्जैक्ट सीस्मिकली एक्टिव जगह पर बनाया जा रहा है। फ्यूचर में अगर कभी इस जगह पर कोई अर्थक्वेक आता है और ये डैम में कोई क्रैक डेवलप होता है या ये डैम डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो पूरे के पूरे शहर इंडिया के मैप से वाइप आउट हो जाएंगे। इतना पानी ये डैम एक साथ इंडिया में रिलीज कर देगा, और इससे इंडिया, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों को खतरा है। मगर फिलहाल चाइना ने कह दिया है कि भाई हम तो डैम बना रहे हैं। ये देखना है कि इंडिया क्या डिसीजन लेता है, चाइना को रिटेलिएट कैसे करता है, और क्या हम ये डैम बनाने से रोक पाएंगे। जब ये होगा तब एक बड़ी अपडेट मैं जरूर दूंगा, एक नए वीडियो के फॉर्म में आप तक लेकर आऊंगा। फिलहाल आप या आपके कोई भी रिलेटिव फ्रेंड किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज उनको कहना कि जरूर अटेंड करें मेरी 2 घंटे की मास्टर क्लास, लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है। चाइना से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आप यहाँ देख सकते हैं, और अभी मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की एक अमेजिंग वीडियो की सीरीज चल रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल की This graph shows that अहो मित्राणि कथं भवन्ति सर्वे अस्माकं यूट्यूब चैनल इंडियन पिक्सेल्से भवतः स्वागतमस्ति। अद्य वयं संस्कृतस्य रोचकत्वानि तथ्यानि अन्वेष्टुम् आरब्धुम्। भवतः This episode, I'm going to talk about how Mother forces her toddler to... I mean, honestly, at this point, I wouldn't... Previously on Kings and Empires of United India, the mighty Mauryan Empire. मैं अभी खड़ा हूँ मराठाओं की राज... I live in a city. Bangladesh. But what is exactly happening? Bangladesh remains tense. We begin in Bangladesh, where young people in Bangladesh took to the streets to demand change. अगर तुम्हें लगता है इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप है जिस पे लोग सिर्फ चैटिंग और सोशलाइज करने आते हैं, तो ये Ladies and gentlemen,
Ladies and gentlemen, welcome back to the first event of Today you are going to learn how to play the Caro-Kann defense, which happens after white plays e4, the king's pawn, and you respond with c6, and on your second move you will play d5. Normally what white does here is play the second pawn, and then you respond this way. White, of course, can also move a knight or this knight out as early as move 2, but for now let's try to be principled. White plays 2 pawns in the center, and you play d5. The way we can break down the Caro-Kann starting position is the fact that white has 3 options with the e-pawn. White can push it, white can capture your pawn, or white can leave this pawn here and protect it, or in some cases just forget that it's not guarded and you will take it in that case. Let's start with the easiest one. Let's start with white takes. You recapture. Now, in this position, essentially white has 2 ways of playing. White can either play the move c4 and challenge your pawn immediately, which is called the Panov variation, or white can just develop pieces normally and not really challenge your setup at all. So that way, if white develops normally, your next moves are basically automatic. You're going to play knight c6 and knight f6, okay, knights before bishops. Then you will decide where to put this light-squared bishop. Maybe you want to put it on f5 or g4. Maybe you get pinned, and you want to play bishop d7. After you decide what to do with the light-squared bishop, you will move this pawn, get your dark-squared bishop out, and then you will castle. Let's see what that looks like. So I said knights first. Let's say something like this. Now you will get your bishop out to f5. G4 can be good if there's a pin, but right now there's no pin because the bishop is here. Castles, e6. Bishop f4, bishop e7, or d6 is completely fine. Let's say rook e1 and castles. Congratulations, you now know how to play the exchange variation of the Caro-Kann defense. Your next moves could be playing on the queen side. This is normally what is possible. Sometimes you can hop your knight into the center of the board, but in general, I'm not going to go too crazy on the in-depth analysis. This is how you play the exchange. Now, when white tries to play an early c4, what I recommend is starting out with the knights as well. But here, when c4 happens, I actually recommend playing a bit more solidly with e6 right away, just to solidify your center. And then you can, after developing your pieces, put your bishop on b7. So when c4 happens, go for e6. Let's say something like this. And then after castles, maybe you play b6 and bishop b7. Another thing that you can consider is that when this bishop moves once, you can take the pawn. And that will make the bishop move a second time. So a little trick there. You make your opponent move the bishop a second time, and then you castle and play b6, bishop b7. And you have a nice and solid structure. So that's the exchange. That's the position after white captures. Now, white also can just play a move that protects the pawn. Now, anytime this pawn is left there, you take it, okay? And you do that, they recapture normally. There is also one gambit here. That gambit is called the Blackmar-Demer gambit, and that's with f3. And basically, white wants you to take and help them develop with a big initiative. Against this, I recommend just pushing. Just give the pawn back, leave this pawn ugly, and continue with your natural development. The protect variation of the Caro-Kann, or the classical variation, is very solid. You have 2 ways of playing it. I'm going to give you every single way. You have knight f6 right away, challenging this knight's authority in the center. And if they capture, you can explore 2 options here. The Tartakower, which is the e takes f6, bishop out, castles, very solid. You do have doubled pawns, but they're very nice to protect against the king invasion. Or you have the more dynamic and crazy gf6. Now, gf6 is called Braunstein-Larsen, and g takes f6 allows you to get the open g file, and allows you quick queenside development, and you're going to try to castle the long way. Okay, so knight f6, now they also don't have to take, in which case you just need to develop your pieces. So you can fianchetto and castle, you can play the bishop out to g4, obviously you can't play bishop f5 anymore, but even when they retreat, I sometimes like to go crazy, h5, h4. Some people will retreat, those people don't really know what they're doing, and what's considered the classical main line is bishop f5, okay? So bishop f5 attacks the knight, sometimes you'll trade it, if the knight comes back, you also come back. If they try to trap your bishop, make a little space for it. This is the main line. There have been tens of thousands of games played here. This is not a full openings course. I'm just giving you a breakdown of the theory around this position. But the protect variation, or the classical variation, in general is not too scary with the knight. You can just take and go for this knight f6 or bishop f5 setup with e6 as well. The one thing about the protect variation, this one looks a little bit strange, not scary, but it's actually pretty dangerous. It's called the fantasy variation. And against this, what I like to do is I like to just go g6. Bishop g7, and then slowly try to chip away at white's center. So something like this. This might happen. White tries to castle queenside. You can play different moves here, like taking at some moment and developing. That's one way to play this position. Another way is the very open fantasy variation, which is when you play takes, and just launch out with e5. And of course, then if they capture, you don't take the queen. You have this nasty check, and you're attacking the e-pawn as well. So there's also e6, the very, very solid anti-fantasy variation, but that is one thing that you should know. This is for the more advanced players. You will be facing f3 quite a bit, I think, much more than folks that are beginners. And
I should just say that, if white starts out with a knight move, all of the same stuff applies. There could be the advance, there could be the captures, and if they play something like this, just take and go knight f6 or go bishop f5. It's all the same. Now, let's look at the advanced variation. There are two ways to play the advanced variation. The variation that I like to suggest for folks, which is c5. The immediate counter strike in the center. And if white does not take the pawn, white plays knight f3 or white plays c3, trying to keep the center together. Your next few moves are very natural. You're going to play something like knight c6, move this bishop out depending on where this knight is. If the knight goes to f3, you will pin it, and then try to play e6. Important to move the bishop, then play e6 so you don't block the bishop in. At a certain moment, you will take on d4 and finish your development, so something like this. In a lot of these positions, the d4 pawn becomes a liability for white. Notice how I did that? I took the knight to destabilize white's center, then played e6. The development of these pieces is a little bit tricky, but your knight comes out to f5 or to g6. Or to g6. So it's going to take the knight a couple moves to develop in the advanced variation, but you should be able to do it with ease. The most critical approach is to take this pawn. Now, I still recommend knight c6. There's a little bit of venom here. White can play like f4, for example, which is in my course, but the same principles apply. If the knight comes out, the bishop comes out, and after the bishop comes out, you will try to regain the c-pawn with your bishop and have a nice and steady position. The other way, if you don't want to play c5, is bishop f5. This is considered the main line, and now your approach is to play c5, but by playing e6 and c5 immediately. The most challenging setup to the bishop f5 variation is called the short variation. White plays knight f3 and bishop e2 and castles. You can do a little bit of exploration there. Another very aggressive system as well is knight c3 to try to play g4 very early. You've got to be careful not to get your bishop trapped, and that is on full display after h4. If the h-pawn moves, you need to respond with the h-pawn, because if you play e6, you will get your bishop trapped. Do not get your bishop trapped. Make sure that your bishop always has some space. If they move the h-pawn early with h4, I highly recommend just h5 and then playing from there. But seeing as this is a brief video on the Caro-Kann, I think that basically covers everything you need to know. Just from watching this video, you should be able to go play some practice games, get a little bit of experience, and grind from there. Hope this was useful. I should also say right before we go that since this is only against the king's pawn, a good supplement to this is the Slav defense against d4. So you can start a lot of your games with c6, d5, and getting familiar with those structures. Let me know your thoughts in the comments below. In particular, which openings you want me to cover in a 10-minute video just like this one. Like the video if you haven't already, and I will see you. In this video, I'm going to show you one of the most dangerous openings that exists in chess, one where you can potentially checkmate your opponent in just 8 moves. The video will be split into 3 parts. In the first part, we'll look at it from white's perspective, then we're going to take a look at it from the other side with black to show you what to do against it, and in the final part of this video, I'm going to talk about the best way to learn all of these moves, and I've put all of the moves in the description. Alright, let's go. So this is the fried liver, and it begins after the moves e4, e5, which is already very standard, knight f3, knight c6. Now, if black plays knight f6, you can't quite fried liver them. You can play a bit more standard, but knight c6, bishop c4. So far, so good, nothing special. Black now plays the move knight f6, just getting the second knight out, and now we get the picture on the thumbnail, knight g5. You cannot fried liver someone unless they play the move knight f6. If they play bishop c5, you might need to incorporate something else, because the point is that knight g5 is met with the queen. So knight on g5 is only possible if black develops the knight to f6, and you are now threatening the pawn on f7 with the knight and the bishop. This isn't some sort of genius trap. White isn't completely winning here, but there are a lot of things that black can do wrong, and first I will show you how black can lose immediately. So this attack can only be blocked if black pushes this pawn 2 squares to d5, okay? If this happens, you will take with the pawn like this. Now, the move that black can play here, which causes so much trouble, is the extremely natural recapture with the knight, which just seems blatantly logical, because if you take, I just take, and I'm fine, and I reopen the attack here. But here, white detonates an explosive knight f7, kaboom, hitting both the queen and the rook. This is a huge problem. Now, black takes, because if black doesn't take, you get huge material, and when you see this and this, you bring out the queen with check on f3. The queen attacks the king, and a double attack with the bishop on the knight. And now, the very first game I ever played in a chess tournament went like this. My opponent hit on g8, bishop takes knight, is a mate. I mean, black has one way to get out of it. They can sacrifice the queen, and then black has one more way to get out of it, and that's to bring the bishop. So officially, it'll take you 10 moves, but it's mate on the 8th move if king to g8 happens. Now, the best move after queen to f3 is not for this to happen. I mean, I wish I could end the video there, but I'm going to give you all of the secrets. Of course, if black moves the king anywhere, you just take the knight if it's free. If black blocks on f6, you can take like this, and that's a completely winning position. But if black plays the move king e6, this is the most challenging thing. This brings the king to defend the knight on d5. And now, rather than taking it, because that would result in a trade, you add pressure to this pin with the move knight c3. Now,
three things attack this, and for example, in this position, if black plays like knight d4 attacking our queen, we will take with the bishop, check, move the queen out of the way, and get on with life by castling. But if black defends this knight with a move like knight b4, which is considered the main line, actually, this position has been reached, what I recommend for you to do here is to not get so worried about defending this pawn and just castle. And what this is doing is it's readying a rook to enter and join in on the attack. Black in this position cannot take, because the bishop needs to, the knight needs to maintain the guard of this knight from the bishop, so black will have to play c6. Nothing else. Literally, there is nothing else that black can do. Black has to overprotect, and now I really like the move pawn to d4, shattering the defenses in the center. If black takes this, black immediately loses. It looks like rook e1 is extremely strong. Actually, the best move here, I believe, is knight to e4. And what this move does is it just wins the g5 square for both of your pieces with bishop on g5 and brings the rooks to the middle. Now, I can safely promise you that if you reach this position, you will win 90% of the time. Maybe I'll leave 10% for nonsense. It would, by the way, be a miracle if you already reached this position that black found everything. Black has one more move here, which is going back to e7, but this is too passive. You block out both of your pieces. Now even d4 right away is extremely strong. If pawn takes d4, there is knight takes d5. So you have this, and now queen e4 check. And now you're just guaranteed to win back this knight. If king here, check here, and bishop g5. Bye-bye, good night, au revoir, take care, you win. Congratulations. So the landmine of traps that can happen after knight takes f7, and frankly, after knight takes d5, is insanely high, right? The main line after d5, pawn takes d5, is the move knight a5, okay? Knight to a5 is considered like, even GMs are playing these positions. And now what's considered the main line for white is to give a check here with the bishop on b5. I can also recommend for you, if you don't want to study so much, the move pawn to d3, which the engine doesn't prefer as the main line here, but the point is that if you take so quickly, I just kind of get my pawns together. And black is considered totally fine here. The main line is to actually attack the knight, and now the knight cannot take because it's blocked. So something like this, push on e4, so if of course we take, we lose our bishop, like queen e2, and then something like this, where we've pinned the pawn to the king, it cannot castle, it cannot capture, but of course black can just castle on the next move and be completely fine. D3 is actually a pretty practical weapon if you're potentially like 15, 1400, 1300. Above that, people actually are studying this stuff like in dense theory, and I said at the end I will show you all the dense theory and how to study it. So the main line here is to give this check on b5. Black blocks with the pawn, sacrificing a pawn, and now white has a plethora of options, which I'm just going to show you as an introduction. The main, more trendy move is bishop back to d3. The other line is bishop back to e2. That's considered the massive main line. And there's also one tricky line, queen f3. And the point is that if c takes b5, you take on a8 and you win the rook. And okay, I'm not saying you are completely winning, but black plays bishop b7, for example, you can take and win another rook. So look, 12 moves into the game, black doesn't have a queen and two rooks anymore. Look, I don't know how much better I can give it to you, right? Like, I'm sorry. I'm trying, okay? If you're not happy with this +9 on move 12 or mate on move 8, look, I'm doing my best. Now, this is the main line, and it's considered so, and you feel free to study it. But there are other things that black can do even if black makes it into this position. D5 is the only move, okay? According to mainline cutting-edge engine theory, one nasty counterattack is bishop c5. This is known as the Traxler, and if you've made it this far in the video, 7 minutes is a lot of dedication. You should know that tomorrow I will launch a video which is going to be the sequel to this video, okay? And I'm going to do a full deep dive on the Traxler. It is so poisonous. This very well could be the most dangerous counterattack in all of chess. The Traxler's point is that if you lazily take on f7, forking the queen and the rook, there is bishop takes f2, dynamite check. And if you take again, there is knight takes check, and the queen is coming. What I recommend is to not get into any of this, and simply take the pawn with the bishop. The opponent will move the king, and now you just slide back. And what's happened? You have a pawn up, they cannot castle, you'll calmly continue to threaten this, stabilize your king by castling, knight c3, d3, life is good. And you're fine if they try to go for this. Of course, I will show you in the section with the black pieces the nastiest things that we can do as well if they play into the Traxler. But that's basically the only thing. For example, some people, when they get hit with this, will go here, we just take on f7, we win the rook, and then we move on with life. What does that look like? d3, knight c3. If we can get out with the knight, that would be fantastic, but of course there is something like this. And here, if you rush to simplify, you will lose the knight. That knight is a goner in many positions, but you, again, d3, knight c3, here. Again, you're up a ton of material. There is one tricky line, which is knight takes e4, trying to bait you into playing knight takes f7, and then there is queen h4. So generally, you will play knight takes here most of the time when this queen cannot get out. If the queen can get out and this bishop is out as well, it's better to just go check, force the king up, and here the winning move is d4. And it's d4 because if knight takes, you have bishop takes knight with a x-ray on the queen, and for example, if d4, pawn takes d4, you just bring back the bishop, and you attack the knight, which we know cannot take your knight. If knight f6, there is queen e2 check, king to d6, and now we fork the king and the queen.
So that's also very nice. But the main line will be d5. You're free to explore deeper. Actually, there's one line I will show you in d5 with the black pieces, which the section we will go to now, which is actually kind of interesting. And again, you can explore with both sides. So for the next one, we're actually going to switch it around so that we will be the Gotham viewer with the black pieces, and they will be Nubovich with the white pieces. So the first thing is you don't have to play e5, right? You can avoid all of this. Again, against knight f3, you can play the Stafford Gambit. But if you want to play into the fried liver, and even here, you can play just bishop c5. You can play g6, bishop g7, just for those of you that don't want to get hit with the fried liver anymore. But there's also just playing into the fried liver and then turning the whole thing. They're going to think that they won already. Number one is bishop c5, right? So the Traxler counterattack. I said I'm going to make a video on it tomorrow. This is why you should watch both of them together. If they play knight takes f7, bishop takes f2, king takes f2, knight takes e4 check, and the queen comes out. Terrifying, terrifying line. Just an example I can show you. If the king goes to f3, for example, there is queen f6 check, king takes knight, and here we have a mate in a few with queen f4 check, king d3, and the beautiful move, pawn to d5. And what pawn d5 does is it sacrifices the rook, but hits the bishop. So if the bishop were to take, we can hunt these two down with something like check, king e2, here, and check, and we win. Again, analyze this with a database and with an engine. If you haven't seen my video on how to do that, do that. Literally posted it yesterday on how to study chess openings. The Traxler is absolutely terrifying for the uninitiated. The best thing to do is, again, to take with the bishop. But I highly recommend investigating the Traxler. If you're watching this the day before that video comes out, I'm sorry, but you'll have to wait until tomorrow. Now, there also is the move d5. And d5, after pawn takes, you gotta go knight a5 if you want to play the main line. But there is some venom here in one other line I have not shown you. And that line is the line b5. Now, this is one of the trappiest, craziest lines that you will probably experience. If white just takes this pawn, white is already in trouble because you will play queen takes d5. That hits this, and this pawn in the corner. This leaves white with a very unpleasant choice, taking your knight and losing the bishop completely, or retreating all the way back to f1. Retreating back to f1 actually isn't a completely terrible move, but you just play bishop c5, you will castle, and for the cost of one pawn, you have every single piece nearly developed. I think it's worth it. Of course, white can attack your queen, but you have this, and you threaten checkmate. And then again, bishop b7, castle, and bring your rooks to the middle of the board. So, b5, bishop b5 is terrible. Actually, the best move after b5 is also not even to take the knight, because then you take here, and the position is wacky, but you will win this pawn back, you will do everything I just described, the bishop will get active here to g4, white's position is not so simple to play. The best thing is to play bishop back to f1, voluntarily. It's like, why? Well, for example, after something like h6, this knight should move. And it will take on f7. That's one option. So here, for example, king takes f7, d takes c6, and bishop e6. The engine doesn't love this variation, but it is playable, and it's playable because if white gets greedy, taking all these pawns, again, queen d5, bishop c5, and the rooks come to the middle of the board. But the main line, it goes after knight d4, okay? The main line here, after bishop to f1, is not to play h6. It's to play knight to d4. That defends the pawn on b5, okay? And many people here already will not know what to do. There's only one move for white, and that move is pawn c3, which attacks our knight, which looks natural, but let me just show you what can happen if white plays something bad. Let's say white plays knight c3. If white plays knight c3, we play bishop g4. Okay, this is the point. We attack the queen. Now if bishop to e2, which again looks natural, we go take, take. Now this is very passive, and h6. Whose man's is this on g5? So the knight's gotta go. If the knight goes here, we can take on f3. This is awful, and queen takes d5. We are no longer down a pawn. White's position is awful, and we are just much better here on move 11 with the black pieces. So the only move for white after knight d4 is the move c3. And here what I recommend is going knight takes d5, creating the attack on the knight, c takes d4, queen g5, allowing the bishop to return with a check on b5. And if white doesn't see that, if white, for example, just takes the pawn on e5, then after check, something like this, we have this, and we defend the pawn. And again, black is just doing very well here. In fact, black is better here. Black is just better. Why? We have 3 pawns and 3 pawns together, and they have a weak pawn on d2. Like black is just better here. A little bit, but black is doing very well. In reality, if they play bishop b5, we just slide our king over to d8. And now, white taking on e5 can lead to a catastrophe, because we would just take on g2. Number one. And there's other lines. So, for example, if queen to f3, which pins the knight like this, we have the move pawn takes d4. So there's this. And if bishop c6, which looks very natural, oh wow, a fork, we have knight to f4. And believe it or not, taking this rook is losing for white. Bishop takes a8, we have bishop to g4 attacking the queen. If queen to e4, we have bishop d6, gluing the position together. This is no longer a check. How do you stop rook e8? How do you stop rook e8? Let's say you play back to c6, preventing. f5, attacking the queen. Where's the queen gonna go? If the queen goes here, right, because that's the only, look at this, rook e8 anyway. What? Why? I'll show you. If bishop takes e8, they have queen e7 check. If king goes to f1, it's mate. So the queen has to block. We go check,
king to f1, and we win the queen, and it's not just winning the queen. After queen to e4, it's mate in 7. White played natural moves, and on the 19th move of the game is getting checkmated immediately. How do you remember all of this? You might not. It's 19 moves. However, you take it on a move-by-move basis, right? First, you have to play into the fried liver. You'd be surprised how easy it is to memorize all of this. Okay, they take my pawn. Okay, boom, I hit them with b5. If they somehow find the best move, then, okay, great. Then I play knight to d4. If they attack my knight, I have to remember to take here, right? And that is how you do it. That is how you study. I personally think this is one of the most venomous traps we have. I say that word a lot, but I mean it. Because do you see how natural all of that looked? Right? And if all of this were to happen and white finds the best move, which is to castle in this position, still it's a game. Because we play something like bishop b7 or rook b8, and we try to line up pressure on this g2 pawn. I mean, it's never too late to throw the game away. You know, something like d3 happens with a discovered attack on the queen, knight to f4, and it's mate. g3, knight h3, mate. Mate on move 12. I mean, the amount of ways you can win here if white plays totally naturally looking moves is amazing. Truly, truly amazing. So that's it. I mean, that's everything that I wanted to show with the white and the black pieces in the fried liver, right? With black, you can avoid it by not playing into it. You can also play into it and slap your opponent in the face. Not physically. Please don't do it physically. Gotham Chess does not condone violence to opponents. But that is how you would study this. And I said that at the end, I would tell you the best way to study, right? Because I put the moves in the description. I want to give that to you before you go. If you made it this far, you're amazing. Thank you so much. You get the moves, right? Put those moves, first of all, watch my video, How to Learn and Study Chess Openings, if you haven't already. Put the moves into a reader. Play them out on a physical board, print them out if you have to. That is the best way to do it. Play them out against a friend. But you have to remember for white and for black how to do this, and the best ways to go about these systems. When you play a game, let's say you lose, let's say you play prep and you lose, go analyze it with the computer. Be like, okay, I followed all my notes until this move. When my opponent played something Levy didn't cover, why did Levy not cover that? Oh. In this video, I'm excited to share with you one of the most dangerous weapons in all of chess, one where you can have a completely winning position in 7 moves and checkmating within the first 10 to 12. I've split the video, as always, into multiple parts, and at the end I've included a bonus lesson to give you other options in case the position doesn't land on the board as you would like it. So, we are jumping into this with the black pieces. White has to play e4. We gotta go e5, very standard. Knight f3, knight c6, and the bishop comes out to c4. Everything else will be covered at the end. Knight f6, and now knight to g5. This is called the fried liver attack, and many people will think that they've already succeeded in getting a winning position. Because the knight is threatening to take on f7, we cannot take back, and then they are going to win material. But here you will uncork something so vicious. You're going to play the move bishop c5, making it seem like you've blundered material, you've got to move your queen and lose your rook. But after knight takes f7, you are going to throw a haymaker. Bishop takes f2 check. And now is where the fun begins. White can take back that bishop, and then afterward we will look at what happens if they play king to f1. There's a lot of branches here, and all the moves have been included in the description. King takes on f2, and now we delay again with knight takes central pawn check. White king can go to 1, 2, 3, 4, 5, 6 squares here. 2 of them survive, 4 of them lose immediately. The 2 that survive are hiding on g1 and going diagonally to e3, although I can almost guarantee you'll win 90% of the time if it goes to e3. Another move, for example, if they go to f3, will result in an absolute demise with something like queen to f6 check, and the king will get hunted down in the center of the board. Oftentimes the move pawn to d5 will be very useful here, and it's already basically a checkmate. There is nothing here that can be done. If the king goes to f1, then the other queen move is not to f6. Before that was a direct check on the king on f3, but because the king has gone to f1 and the queen can get in the way, in these positions we have queen h4. Keep the move queen h4 in mind because it's going to happen in a lot of these positions. Now if something like queen to f3 attacking our knight, we have knight d4. And we see a serious issue here. The queen is hit, we are threatening a mate, it's almost impossible to stop. We're also threatening to take here and win the rook. We're also threatening to just bring our rook, ultimately. The move rook to f8 is going to happen at some point as well. The 2 best moves that our opponents can play are hiding the king. I'll start with this one. So we play queen to h4, and now the best move for the opponent is to play the move g3. This is the only move. After knight takes g3, if something like h takes g3, we take with check, king moves to f1, and now we have to get our rook out of danger with something like rook to f8. The current count of material here is that we are down 3 points, but in a moment we are going to play d5, sacrificing our central pawn, bringing out this bishop to attack the queen, and also this knight is in serious trouble as long as we can disconnect here. So d5, the bishop pops out, the knight jumps in, and we are hunting down this poor king with no cover. If king comes out to e3, which very well might happen, we do not have queen to g5 check because the knight takes, but again this move queen h4, and you'll oftentimes see the move g3 here. You have to take, and you have to give a check. And you have to give this check because the king doesn't have a very convenient square to go to. If it goes to e2, you take on c4, and it's a fork. You've officially won back both of the pieces that you've sacrificed, and this king is absolutely terrible. Obviously, there are other things. Like, for example, if pawn comes up, my favorite, and one that might happen to you, you have a mate in 2. Queen f4 check,
king to e2, and queen f2 is mate. You've checkmated your opponent with the black pieces in 9 moves. I can't do much better with an openings video, okay? I'm doing the best I can. I have won games like this. It totally does happen. And it's actually not the rarest thing ever. Now I'm going to show you my most favorite line, one that is absolutely beautiful and hopefully convinces you to play the Traxler. So, queen h4, and what happens if they bring their queen out? I have seen this happen. They bring their queen out. We actually come back with the knight. What does that do? It prepares this move, and we have knight d4 and queen d4, and this bishop is under attack. And I've had games go like this. Knight takes rook. Now we jump in with the knight attacking the queen. The queen's got to be very careful. For example, if the queen goes to g3 offering a trade, we have knight to f5, which is just a fork, and we win the queen. So I've had people play queen back to f1, and now absolute beauty. So d5 attacking the bishop, and here watch this. Knight g4 check, king slides over, knight jumps into f2, king slides over, and the beautiful clearance sacrifice, knight to e2 check, queen has to take, and the queen slides over to the center, and it's queen d4 mate, beautifully done in the center of the board like this, and the king is blocked in by its own pieces. So there is so much poison in this, right? But white doesn't always have to fall for all of our traps. This all these problems begin right here. Okay, and then we will even back up and I will show you bishop takes f7 as well, so good thing you didn't click out of the video. King to f1 is considered the critical move. Because our queen remains under attack, we cannot check the king. So the best move has to be to get the queen out of danger. Now, white should of course continue to go and take our rook. And now, we do not slow down. Pawn to d5. Why? Because if bishop takes, the bishop goes to g4 and the queen is literally trapped. The queen is completely boxed in, the bishop is protected by the knight, and congratulations, you win on move 8. So the best move is to go pawn takes d5. And then here we jump in with the knight. So we are now down 6 points of material. This bishop can still not be captured. And here I've won a handful of games with the move c3, trying to get this knight out. You go bishop g4 attacking the queen. The queen's only way of escaping is to give you this check. And you play the silent killer backward knight slide to d7. And here the game is lost. Why? Because, for example, if they take on f2, you bring in the queen. You hunt the king down. If they take your knight, queen to f6. Who is saving this king? I'll tell you who. Nobody. Nobody can stop this angry queen coming in. If d takes e5 hitting the queen, slide it on forward. If the pawn comes up, you snap it right off the board and deliver a checkmate on f2. So much power here. But, of course, I have to tell you what is the best thing to do here. And the best move in this position, the most critical testing line of the Traxler, is to sacrifice the pawn and attack our queen. That throws us for a little bit of a spin, and here I'm going to show you 26 moves of engine theory where white emerges this much better. If your opponent knows this, they've either watched this video and they have the notes next to them, or they're using a computer. So here we go. We take with the queen. The best move for white is to play knight f7. We bring the queen to c5, attacking the bishop on c4. Pawn to d3. We go bishop g4, attacking the queen. Queen to d2, and the bishop slides out of danger. Now knight c3, we go b5, and white has to know the only move here to give any sort of advantage, b4. Sacrificing the pawn to make the queen a target. We don't take the pawn, we go back. Bishop b3. We have to play knight d5, sacrificing the knight 2 different ways so we can go queen f6 and queen attacking the king. Bishop d5, queen f6, king g1, bishop e2, takes. Sorry, bishop f3 first. Takes. They don't take back, because after pawn takes, there is knight takes, and we hit the queen. Then queen e3, we take the knight, they take back. Check, here. Sacrificing the knight on f3. Queen h5 check, king g2, queen g4, and now white has to sacrifice the queen with queen to g3. Take. Bishop d2, and we take a breath. This is what computers want to happen here. They want white to sacrifice the queen and emerge in a position where black has a queen and 6 pawns versus a rook, knight, and bishop, and 4 pawns. Look, I had to include this, otherwise someone in the comments would have been like, you never showed this line. Do you think anybody's gonna ever play this against you? No. Have I wasted like 2 minutes of your time showing this to you? Potentially, but I wanted to show you that this opening doesn't win automatically. Now, one other thing that we have not looked at yet, and we have to look at it. What happens if they don't take on f7 with a knight? The most critical move, the one that I recommended in my fried liver video. What if they play bishop takes f7 check? This is considered actually to be the best move against the Traxler, but I'm going to show you that it's not so simple. Just because you read some computer line before the game, or you watched one of my videos, doesn't mean that it's practically easy to play. It's very different to watch a video, right? I'm sure we all know this. It's difficult to watch a video. I mean, it's easy to watch a video, but it's much harder to go play all the moves right. So, in this position, we play king to e7. So the bonus is we get to play a mini bonk loud, right? To king e7. White has to get out of here with the bishop now to one of these 3 squares. If white doesn't, if white just castles, then just h6 and we win. The knight cannot guard the bishop anymore. So, congrats. You're gonna win a piece. So the bishop has to get out. What's considered main line here is bishop d5, which I never understood. But let's just say the bishop goes back to c4, just where it was, or b3, which is what I recommend in my video on the fried liver, because I don't like that d5 can attack our bishop. Sorry, wrong bishop. This bishop. I don't like that. I prefer the bishop on b3. Even if the bishop goes to b3, the next, like, 5 moves for black, you can pre-move, basically. First, you play rook f8, because you don't want knight f7 to be a problem anymore. Now the best move for white is to castle. Because here, if white plays something like knight to c3, which is also kind of possible, you come up with the following plan. I mean, knight c3 castling. Bishop takes f2 looks good, but sadly,
this just doesn't quite do it with the double check. Actually, white is okay here. So, however white decides to set up, like let's say knight c3, you will play d6, h6, bishop g4, and bring this queen around like this. So white taking our pawn opens this diagonal, and the queen slides over. In a perfect world, this looks something like this. Let's say castle, d6, d3, and now we can go queen g6. If the knight drops back, it's actually us who is attacking the opponent. We have knight to d4, putting pressure, and because the f7 pawn is gone, in the long run, what happens is the f file is also open for the rook, and the king in many cases can just slide back to d8 and be completely safe. So this critical line, even though it's good for white, objectively speaking, is a nightmare to play. The best thing to do for white is to bring the bishop out of danger, and in many cases, to play c3, d4. That is what you should do if you want to play against the Traxler. Bishop f7, go back, and pop these pawns out to d4, even at the cost of losing a pawn, because the king is in the middle.